Hello everyone, welcome back to my channel. We are continuing April 2026 Science and Technology Current Affairs, which are especially curated for UPSC pre-2026 State PCS, SSC Bank Defense Examination. Let's dive into the updates. 10th updates we have already completed. 11th updates we are going to continue. Scientists find cells survive stimulated mass condition. Scientists found certain cells which are capable of surviving stimulated marks like environmental condition. So साइंटिस्ट ने कुछ एक सेल खोजा है जो सरवाइव कर पाएगा मार्क्स लाइक कंडीशन में. क्या मार्क्स पर जीवन संभव है? So it's a very important topic related to mass exploration and astrobiology. So recent findings reveal that simple yeast cell can survive. If the name of the cell is come, the cell is yeast cell. Yeast cell can survive simulated Martial condition, especially intense meteorite impact, shock waves, and toxic perchlorate salts. Scientists dissolve these cells, surviving by forming protective molecular cluster that cover critical cellular function from the harsh environmental stressor. Though earlier assumptions suggested this combined extreme would completely destroy life, the yeast cell exhibited surprising resilience, are able to survive in this harsh condition, means able to survive in intense meteorite impact, shock waves, and toxic perchlorate salts. So it possesses molecular seals. The cells naturally activated defense mechanism, clumping into protective molecular structure that shielded essential biological processes from external pressure and toxicity. So when these defenses were not active, cell survival rates plummeted, proving that the molecular shielding was the key to the survival. So this discovery published in the journal PNAS Nexus, the research significantly broadens our understanding of the habitat zone and how life must endure hostile planetary environments. Environment is a mass condition. The study informs astrobiology by suggesting that the simple microbial life like yeast cell might tolerate the brutal Martian surface if it can deploy similar survival strategy, and highlights the need to prevent Earth-based microbes from contaminative space exploration sites. सो यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रयोगों में मार्स जैसी लो प्रेशर रेडिएशन और अत्यधिक ठंड की परिस्थितियां बनाई गई. साइंटिस्ट ने पाया कि कुछ सेल सिमुलेट कर पाते हैं मार्स जैसी परिस्थितियों में जी सकते हैं. सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल शो रिमार्केबल रिजिलियंस. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ईस्ट सेल. Next update is black hole awaken after 100 million years, scientists observed. Scientists observed a supermassive black hole becoming active after nearly 100 million years. वैज्ञानिकों ने लगभग 100 मिलियन ईयर्स बाद एक सुपरमेसिव ब्लैक होल को फिर से सक्रिय होते देखा है, एक्टिव होते देखा है. वो ब्लैक होल किस गैलेक्सी में आया है? J10073540, reactivating after 100 million years of dormancy. Inactive state is called dormant state. So J10073540, the massive outburst spews powerful jets of plasma across nearly a million light years, creating a chaotic cosmic volcano that fundamentally reshapes its surrounding galaxy cluster. So it shows galaxy evolution. The process is stop and start behaviors, suggests that the growth of galaxy is not slow and peaceful processes. Instead, it is defined by very violent type of eruption and quiet silences that sculpt the galactic environment over cosmic time. So it was the finding were observed using the giant microwave radio telescope GMRT and the low frequency array, which allowed astronomers to measure the contrast between old plasma particles and new energetic jets. So key points we have to remember that supermassive black hole in the galaxy is Z10073540, reactive
reactivating after 100 millions or inactive or dormancy stage. And the galaxy evolution, the behavior is start, stop and start behavior. So the dormant to active behavior means the black hole had remained dormant before suddenly emitting intense radiation. Supermassive black holes are usually found at the center of galaxies. याद रखना है कि supermassive black hole हमेशा गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। और एक्टिविटी बिगिन व्हेन द ब्लैक होल स्टार्टेड कंज्यूमिंग नियर बाई मैटर। ये एक्टिविटी तब स्टार्ट होता है जब ब्लैक होल आसपास के मैटर को निगलना शुरू किया, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ी, डोरमेंसी टूटता है, इनएक्टिव स्टेट टूटता है। तो साइंटिस्ट डिटेक्ट किया स्ट्रॉन्ग एक्सरे एंड लाइट इमिशन फ्रॉम द रीजन, डिस्कवर्स हेल्प अंडरस्टैंड गैलेक्सी एंड ब्लैक होल इवोल्यूशन। सो इस डिस्कवरी से ब्लैक होल इवोल्यूशन और गैलेक्सी को समझने में मदद मिला है। So 100 million years बाद जागा एक ब्लैक होल, scientists shocked by sudden cosmic activity. Next update is scientists turn plastic waste into Parkinson drug. पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. इट हैपेंस व्हेन ब्रेन सेल प्रोड्यूसिंग डोपामिन स्टार्ट डाइंग. डोपामिन स्टार्ट डाइंग करने लग जाता है. डोपामिन होता क्या है? डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर है दैट हेल्प्स कंट्रोल मूवमेंट. So Parkinson disease is a brain disorder that affects body movement, balance and coordination. It happens when brain cells producing dopamine start dying. Dopamine is a chemical messenger that helps control movement. So what are the symptoms of Parkinson disease? Which is tremors, means shaking hands, slow movement, muscle stiffness, balance problem, difficulty walking. So usually older people, but younger people can also develop it. So till now there is a no complete cure yet, but medicine and therapy help control system. Now about scientists turn plastic waste into Parkinson drug. So what are these plastic wastes which is converted into the Parkinson drug? Is PET plastic. So PET plastic, no need to, one is a PET scan, no need to confuse with that. PET scan is positron emission tomography. PET plastic is a polythene tetra. PET plastic is polythene tetraphthalate. So PET plastic is a commonly plastic which is used in water bottles, food containers and packaging. तो पेट एक एक प्लास्टिक है जो बॉटल और पैकेजिंग में यूज करते हैं. सो पार्किंसन डिजीज का एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो कॉज करता है डोपामिन प्रोड्यूसिंग ब्रेन सेल कम होने लगता है. तो पेट प्लास्टिक यूज हुआ है और इससे वाइडली यूज रिसाइकेबल प्लास्टिक पॉलीमर के मदद से ये पार्किंसन का ड्रग बना है. सो इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट साइंटिस्ट एट University of Edinburgh had developed a method to turn PET plastic polythene tetraphthalate bottle waste into L-DOPA. Levodopa, L-DOPA, a primary medication for Parkinson disease by using a engineered E. coli bacteria. The bacteria uses a E. coli bacteria to convert plastic-derived tetraphthalic acid. The researchers created a sustainable green method to produce Parkinson drug. So in this method the thing is used is पेट प्लास्टिक बोतल को यूज करते हैं, उसके वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं एल डोपा में, लेवा डोपा में, और ये प्राइमरी मेडिसिन बना है पार्किंसन डिजीज में. और इसके लिए हम यूज करते हैं क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को जो कन्वर्ट करता है प्लास्टिक डेराइव टेट्राथैलिक एसिड को, और ग्रीन मेथड से हम प्रोड्यूस करते हैं ड्रग को. सो पेट प्लास्टिक फाउंड इन ड्रिंक बॉटल्स, फूड पैकेजिंग इज केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू tetraphtalic acid, which is then converted by genetically modified E. coli bacteria with the help of recombinant DNA technology into L-DOPA. L-DOPA में convert होता है levodopa में. So this provides twofold environmental benefits, reducing plastic pollution in landfills and oceans while creating a sustainable non-fossil fuel source for critical medicine. So the engineered system achieved a high production titer of 5.0 gram per liter in laboratory. Status it is published, this discovery is published in Nature Sustainability Journals, marking a significant albeit early stage proof of concept for upcycling waste into high value pharmaceuticals.
So, key points to also remember that Parkinson disease affects around 1,66,000 people in United Kingdom, is characterized by dopamine deficiency. So, which L-DOPA helps manage by replenish dopamine levels. जो L-DOPA को हम convert कर रहे हैं पेट प्लास्टिक L-DOPA में, वो उसको फिर से rejuvenate करता है, replenish करता है dopamine को, और मोटर फंक्शन बढ़ता है, जिससे कि पार्किंसन ड्रग की मेडिसिन में ये यूजफुल हो रहा है. Andhra Pradesh launches, next update is Andhra Pradesh launches first quantum test bed. So Andhra Pradesh launched India's first quantum test bed. कहाँ पे? अमरावती. So Andhra Pradesh made history by launching India's first indigenous means country made develop open access quantum computer test bed in Amravati Quantum Valley project, inaugurated by Chief Minister Chandrababu Naidu. The platform democratizes access for researchers, startups and institutions to test and validate quantum hardware and software. So key details and first test bed located at SRM University, Amravati. So this platform is based on superconducting technology and operates at near absolute zero temperature. Minus ये operate करता है बहुत ही absolute zero temperature, that is a minus 273 degrees Celsius. 1Q test beds used housed at Medha Towers, Ganabaram near Vijayawada. This system was developed by Cubiotech and runs on ultra low noise power supply system. So these are the two test beds. So why it is important? It is important for making India program, or 80% locally sourced components are used, and second, it is used open closed door facilities, open assays, and across the country to benchmark quantum algorithms and hardware. So this initiative is a part of Amravati Quantum Valley project. Quantum test beds are experimental platform for testing quantum technologies. This facility supports research in quantum computing and communication. So the project aligns with National Quantum Mission. Quantum technologies are important for cyber security and advanced computing. This initiative encourages collaboration between academia, startup and industry, helps strengthen India's indigenous deep tech ecosystem. सो याद रखना कि क्वांटम रिवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडिया का पहला क्वांटम टेस्ट बेड लॉन्च हुआ है अमरावती, आंध्र प्रदेश. Next, a PACE satellite tracks pollution at factory level precision. The PACE satellites can track pollution with near factory level precision. PACE satellite factory level precision के साथ pollution track कर सकता है. So ये develop हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से. PACE का फुल फॉर्म क्या है? PACE का फुल फॉर्म है Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem. PACE full form is plankton, aerosol, cloud, ocean ecosystem. So NASA PACE satellites represent a major breakthrough in air quality monitoring, which is capable of tracking nitrogen dioxide at a highly detailed factory level resolution by isolating specific emission sources like individual power plants and highway corridors. It helps researchers to easily distinguish distinct pollution plumes. How the technology works? The technology is specifically designed to measure microscopic ocean organism and atmosphere particles. NASA plankton aerosol and cloud and ocean ecosystem satellite has unlocked a new atmospheric capabilities. So PACE utilizes a very high sensitive ocean core instrument, OCI. Unlike standard air quality monitors, the OCI captures a very massive continuous spectrum of light from UV light to near infrared, UV to infrared. So infrared. So it at over 200 wavelengths, so just like biological matter, nitrogen dioxide act as a unique spectral signature that the OCI instrument can detect and isolates. So it is provides high definition mappings. So historically, satellite monitoring nitrogen dioxide को monitor करेगा, कौन करेगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और उसका नाम है Tropomi, were only capable of capturing average across larger regions.
So, PACE stands for Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem Satellite Monitor Aerosol Industrial Pollution and Atmospheric Particles. It provides advanced sensor, provide highly detailed environmental data. PACE helps study climate change and air quality patterns. It also monitors ocean ecosystem and plankton activity. Data may help governors monitor industrial emission more effectively. यह डाटा गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटर करने में बहुत मदद करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए और पॉल्यूशन मॉनिटरिंग से जुड़ा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो याद रखना है कि अब सैटेलाइट बता सकते हैं पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, इवन फैक्ट्री बाय फैक्ट्री। सो नासा स्पेस सैटेलाइट्स कैन मॉनिटर पॉल्यूशन एंड एरोजल विथ नियर फैक्ट्री लेवल प्रिसीजन यूजिंग एडवांस सेंसर। Next update is new theory questions Milky Way central black hole. New scientific theory. Scientists propose a new theory questioning the nature of the Milky Way's सेंट्रल ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्रीय के जो सेंट्रल ब्लैक होल की प्रकृति पर के नेचर पर न्यू थ्योरी प्रपोज की है। सो वो द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे इज नोन एज ए सेजिटेरियस ए। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है मिल्की वे के केंद्र के सेंटर में जो ऑब्जेक्ट है उसको सेजिटेरियस ए कहते हैं। सो रिसेंट रिसर्च ब्रेक थ्रू proposes that Sagittarius A, क्या है Sagittarius A? Sagittarius is the object at present at the center of the Milky Way is known as a Sagittarius A. So a recent breakthrough proposed a Sagittarius A, the compact object at the center of the Milky Way, might not be supermassive black hole. Instead, scientists hypothesize that it could be extremely dense core of mysterious dark matter, specifically made of फर्म्योनिक पार्टिकल्स। ये बना हुआ किस चीज का? फर्म्योनिक पार्टिकल्स का बना हुआ जो मिस्टीरियस डार्क मैटर है। सो द की एस्पेक्ट ऑफ द डार्क थ्योरी इज द डार्क मैटर हाइपोथेसिस। रिसर्चर फ्रॉम मंथली नोटिस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी सजेस्ट दैट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ dark matter could exert the same gravitational pull as a 4 million solar mass black hole. It explains about the star movement. The dark model can explain both the blistering high speed orbit of the nearby SS stars and the large scale rotation of the entire Milky Way simultaneously. So ये बताता है, एक्सप्लेन करता है ब्लिस्टरिंग का, उसका चमकना, ब्लिस्टर करना और नियर बाई एस स्टार को, लार्ज स्केल रोटेशन इंटायर मिल्की वे एक साथ में। सो वाई द ट्रेडिशनल ब्लैक होल थ्योरी इज बीइंग क्वेश्चन। पुराना जो ब्लैक होल थ्योरी को क्वेश्चन किया गया, ये बहुत ही क्वाइट था कंपेयर टू द एक्टिव गैलेक्टिक कोर इन अदर गैलेक्सीज। सैजिटेरियस ए जो है रिलेटिवली काम है, लो है लुमिनोसिटी में, ये लैक करता है। वायलेंटली एक्टिव, टिपिकली एसोसिएटेड विद सुपरमेसिव ब्लैक होल, इसके पास सुपरमेसिव ब्लैक होल नहीं है, ये मिसिंग करता है फ्लेयर अप को, और ये टू स्मॉल डायलेमा क्रिएट्स करता है इन सम कॉस्मोलॉजिकल सिमुलेशन। द मिल्की वे सेंट्रल ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। कुछ कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी में कहा गया है सिमुलेशन में कि मिल्की वे सेंट्रल ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है देन एक्सपेक्टेड फॉर ए गैलेक्सी फॉर इट्स साइज। द डार्क मैटर एक्सप्लेनेशन ऑफर ए पोटेंशियल सॉल्यूशन टू दिस डिस्क्रिपेंसी। So if this theory, अगर ये theory hold करता है, तो it means the center of a galaxy has no event horizon, the point of no return. इससे important point, अगर ये theory hold करता है, तो इसका मतलब होता है कि center of our galaxy has no event horizon, the point of no return. So to test this, astronomers are looking to upgrade the gravity plus instrument, which will observe the stars in even closer tides orbits around the galactic core to reveal more information about gravitational forces in the extreme region. So new theory suggests that it may have unusual or exotic physical characteristics. Finding could reshape understanding of gravity in galaxy formation. Scientists are studying radiation and motion around Sagittarius A. So black holes remain among the universe's greatest mysteries. So it is important current affair referred to astronomy and theoretical physics. So क्या हमारी गैलेक्सी के सेंटर में सच में ब्लैक होल? न्यू थ्योरी स्पार्क्स डिबेट। A new theory question the traditional understanding of Sagittarius A, the Milky Way central black hole. Next update is Artemis 2 astronauts returned safely after historic lunar flyby. Artemis T astronauts safely returned to Earth after a historic lunar flyby mission.
The mission was conducted by National Aeronautics and Space Administration under the Artemis programs. It marked the first crewed lunar flyby mission since the Apollo era. अपोलो इरा के बाद ये पहला क्या था, क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन था। एस्ट्रोनॉट ट्रेवल अबोर्ड द ओरियन स्पेसक्राफ्ट से गए थे एस्ट्रोनॉट्स। स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओरियन। So estimates 2 astronauts safely splashed down in the Pacific Ocean on April 10, 2026, concluding a 10-day lunar flyby mission. The crew commander Reed Wiseman, pilot Victor Glover, mission specialist Christian Koch, and Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen traveled to 406,822 kilometers from Earth, setting a new record for human space travel. So the flawless return marked a monumental milestone for NASA's lunar exploration goals. So highlight of the journey and return includes safe return and recovery. Following the splashdown, recovery teams from the USS John P. Murtha quickly retrieved the crew. All 4 astronauts were in excellent spirits and underwent standard medical evaluation. So mission lunar exploration goal था इसका. Mission supports future moon landing and deep space exploration. Artemis 2 tested life support, navigation and communication system को. Artemis 2 ने life support, navigation and communication system का परीक्षण किया. The mission is considered a step towards future human Mars mission. यह मिशन फ्यूचर ह्यूमन मार्स मिशन के लिए ये मिशन को कंसीडर किया गया है. सो Artemis program include multiple international space partnerships. So it is important modern human space exploration. So दशकों बाद इंसान फिर चांद के पास गया. Artemis 2 astronauts safely return. Next update is Pluto reclassification debate revised after NASA chief response. There is a debate over Pluto's planetary status resurfaced after comments by National Aeronautics and Space Administration Chief. National Aeronautics and Space Administration Chief की टिप्पणियों के बाद प्लूटो की प्लानिटरी स्टेटस पर फिर से बहस शुरू हो गई है. प्लूटो was reclassified from a planet to a dwarf planet in 2006. प्लूटो को 2006 में प्लानेट से बदलकर ड्वार्फ प्लानेट घोषित किया गया था. कब? 2006 में. सो द डिसीजन वाज मेड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किया गया था ड्वार्फ प्लानेट. सो प्लूटो फेल टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ क्लियरिंग इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड. सो ये डाउनग्रेड हो गया ये चीज को. तो नासा ऑफिशियल सजेस्ट प्लूटो स्टिल हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू प्लानेट. सो नासा कह रहे हैं कि प्लूटो के पास अभी भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो अदर प्लानेट से सिमिलर है. So Pluto remains an important object for planetary science research. NASA's New Horizon mission provided detailed images of Pluto in 2015. So scientists continue debating the exact definition of a planet. It is an important topic related to astronomy and planetary classification. So क्या प्लूटो फिर से प्लानेट बन सकता है? हमने ड्वार्फ प्लानेट 2006 में कह दिया था. तो नासा चीफ कमेंट्स रीस्टार्ट कॉस्मिक डिबेट्स. सो सीनेट हियरिंग रिमार्क्स हुआ है. NASA Administration Jared Isaacman publicly stated his support for reinstating Pluto as a major planet. He noted that NASA is exploring research paper to revisit the discussion with the broader scientific community. Viral student later also a heartfelt letter from 10-year-old student named Kaila pleading to make Pluto a planet, not it is a dwarf planet. So he said about that the name of the student is Kaila, pleading to make a Pluto a planet again, received a direct public response from NASA chief. We are looking into this, which quickly captured global planet. So into 2006, it is said as a dwarf planets. That in 2006, the International Astronomical Union established strict criteria for a celestial body to be considered a planet. To qualify, a body must meet all three of these rules. What are the rules? It must orbit the sun. It must be scientifically massive to assume a nearly spherical shape. It must have cleared its neighborhood of the orbiting debris. So Pluto meets the first two requirements, to orbit the sun, assume a nearly spherical shape, but fails the third, that it must have cleared its neighborhood of other orbiting debris. So because it shares its orbital neighborhood with numerous other icy objects in the distant which belt, Kuiper belt.
So as a result, the AIU officially downgraded Pluto to a dwarf planet. So these are very important points. So for a breakdown of why scientists decided to reclassify Pluto, the specific criteria it failed to meet. The reclassification remains controversial, dividing astronomers, educators, and general public. Next update is NASA tracks asteroid 2026 GD Claus flyby. So astronauts 2026 ZD is a house-size near Earth's object that safely flew past over our planet on April 9, 2026. NASA tracked the space rock which passed by it at a distance of 156,000 miles. While this part is closer to us than the moon's orbit, NASA confirmed it posted a zero threat to Earth. So because these small space rocks are so common and these trajectories are well understood, these flybys are treated as routine tracking exercise rather than cause for concern. Next update is National Quantum Mission. So it's about that next update is National Quantum Mission achieves 1,000 kilometer secure communication breakthrough. India's National Quantum Mission NQM successfully demonstrated 1,000-kilometer quantum communication network. 1,000 kilometers achieved years ahead of schedule. The indigenous breakthrough utilizes quantum key distribution to create ultra-scale unhackable encryption keys for defense, finance, and critical infrastructure. So key highlights built using quantum key distribution. Built with the quantum key distribution, the system uses quantum particles of photons to transmit secret encryption keys. Any attempt by hackers to intercept the data immediately alters the defer the quantum state, altering the system and preventing the breach. And it is provides indigenous innovation. The network's technology was developed by QNU Labs, a startup backed by the Department of Science and Technology. So this breakthrough position India as among the global leaders in advanced quantum research and cyber security. So it serves as a major step towards securing the country's digital ecosystem. So भारत के नेशनल क्वांटम मिशन ने 1,000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्वांटम कम्युनिकेशन अल्ट्रा सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए क्वांटम फिजिक्स प्रिंसिपल का उपयोग करता है। यह टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को हैकिंग और साइबर अटैक से सुरक्षित बना सकती है। 1,000 किलोमीटर तक सिक्योर ट्रांसमिशन एक बड़ी टेक्निकल माइलस्टोन है। क्वांटम कम्युनिकेशन डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो यह उपलब्धि भारत के इंडिजिनस क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करती है। क्वांटम कम्युनिकेशन फ्यूचर क्वांटम इंटरनेट सिस्टम को समर्थन दे सकती है। सो कंट्रीज worldwide are investing heavily in quantum technologies. क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। तो अब हैकर के लिए इम्पॉसिबल है। इंडिया अचीव्स 1,000 किलोमीटर क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन breakthrough. So these are about the second part of April's current affairs, science and technology based on science and technology. So I'm going to upload the next part 3 of April science and technology video tomorrow. Thank you for watching. Best of luck for your future exam.